And your video should come on. Sir, just a minute. Go ahead, Mansi. Sir, can we start? Please, please. Okay. Namaskar, hello, and welcome everyone. Good afternoon, all of you. Myself, Mansi Gujjar. I am host of this program. Today, we will start this program with Saraswati Vanna. So, I will invite Sri Kari for Saraswati Vanna. Thank you, Sri Kari. Now, I will introduction of this program with you. Greetings to one and all present here. I am from Lakshmi Gyanpit Madhyamik Shala, Ahmedabad, and it gives me immense pleasure to be your host this evening on behalf of the host school today. Welcome to Great Master, a series of interaction with the legends of description of some of the greatest gurus of Indian music and dance. This series of interaction were introduced to make the new and recent generation aware of the approach and style of legendary artists. Today, we are celebrating the living legendary Guru Ghanakanta Bora, who agreed to share throughout the Great Masters event. We welcome Prime Discipline Vidushi Dr. Anvesha Mahanta Madam, who agreed to share some of her valuable experiment she has had with legendary Guru. I now invite Principal Assistant from Lakshmi Gyanpit Madhyamik Shala, Ahmedabad to give a brief welcome address. नमस्ते गुरुजी और विदुषी जी जो हमें सुन रहे हैं। मैं अपनी बात हिंदी भाषा में ही रखना पसंद करूंगा। लक्ष्मण ज्ञानपीठ माध्यमिक शाला अहमदाबाद से हम लोग होस्ट कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में सफलता मिले ऐसी इच्छा रखते हैं। तो जीवन में कला और संगीत में रुचि लेना आवश्यक है। जैसे अपने तन है या शरीर है, उनको तंदुरुस्त रखने के लिए योग या प्राणायाम जरूरी है, ऐसे ही मन को प्रसन्न रखने के लिए संगीत या कला नितांत आवश्यक है। हम अपना प्रोफेशन कुछ भी करते हो, लेकिन जब हम अपना थकान महसूस होती हो तभी थकान दूर करने के लिए संगीत में रस रखिए या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाइए। ऐसा करते रहेंगे तो अपना जो थकान है मन की बुद्धि की वो ठीक हो जाएगी और इसी तरह जो है हम रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है दुनिया के महानतम वैज्ञानिक, वो अपनी उनको थकान महसूस हो तभी वो वायोलिन बहुत बढ़िया बजाते थे और इसी तरह अपना जो है वो कार्य प्रसन्नता पूर्वक करते रहते थे।
एक दूसरा एग्जाम्पल है अकबर का जो 9 रत्न थे अकबर के दरबार में, तो उनका तानसेन बहुत बढ़िया गवैये थे कि जो मेघ मल्हार राग है या दीपक राग है वो गाते थे। तो अकबर ने एक बार उनको पूछा कि भाई आपने ये सब किससे सीखा? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे गुरु जो है हरि प्रसाद करके, वो जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहते हैं और उन्हीं से मैंने जब शिक्षा प्राप्त की है। तो अकबर जी ने कहा कि भाई आप ऐसा करो कि हमारे दरबार में उनको जरा ले आइए, मुझे सुनना है। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं शहनशाह के दरबार में जाना पसंद नहीं करूंगा। तो बाद में अकबर ने खुद ने सुबह प्रातः तानसेन जी के साथ रह के उनका जो भजन कीर्तन था वो सुना, और बाद में एक सवाल किया कि भाई इतना बढ़िया उनका राग और संगीत इतना बढ़िया कैसे है? तो जो जवाब मिला वो बहुत बढ़िया है, इसलिए मैंने अभी ये प्रस्तुत किया कि मैं जहां अपना आपके लिए संगीत का कार्य करता हूं, और ये जो मेरे गुरु जी हरि प्रसाद, वो ईश्वर के लिए ये आराधना करते हैं, इसीलिए उनके स्वर में इतनी मिठास है। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनेक रास्ते हैं, लेकिन अगर संगीत में इंसान डूब जाए तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर की प्राप्ति भी संगीत के माध्यम से हो सकती है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए फिर से मैं दोबारा ये कहूँगा कि लक्ष्मण ज्ञानपीठ शाला जो है हमारी अहमदाबाद स्थित, उनकी 125 एकड़ में फैली हुई हमारी ये शाला है और 2500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो सभी अभी मैंने सबको लिंक भेज दी है, तो सब लोग ये कार्यक्रम बड़े शौक से निहार रहे हैं और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा, मुझे पक्का भरोसा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी कार्यक्रम की तरह से ये TCS जो है टाटा कम्युनिकेशन ने ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया हमारे लिए रखा है। तो मैं सबका आभारी भी हूँ, सबको धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम पूरे 1.5 घंटे का ये जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से हम उसको एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। नमस्ते। Ramesh sir, you are not audible. Come on and request for Guruji and Dr. Anvesha's introduction, Mansi. Thank you, sir. Now, I will invite Parvat to give us its introduction of Guru Ghanakanta Bora. Yes, Mansi. Bayanacharya Sri Ghanakanta Bora Muktiyar is one of the most eminent exponents and gurus of Sattriya dance, a major classical dance tradition of Assam, India. He is also a renowned instrumentalist, choreographer, and singer. He has won the prestigious Sangeet Natak Academy Award in 2001. Sri Guru Bora was born in 1950 in Majuli. At the age of 4, Sri Guru Bora was brought to the Kamlavari Satra in Majuli as a Satra inmate. At the age of 6, the child Ghanakanta started receiving training in Sattriya dance and music from the great exponent of the Vaishnavative tradition, late Maniram Dutt Muktiyar Barbayan, another renowned exponent of the tradition. Sri Raseswar Saikya Barbayan taught him Natya, means art of dancing, Bayan means art of playing in khol or rhythm, and Oja play means dance style. Sri Ghanakanta completed his training with distinction at an early age and was elevated as Barbayan, means one of the principal artists in the Satra at the young age. His career began at the Satra itself when he was selected as an Adhyapak to coach and train the young pupils in Satra. When the Kamlabari Satra was began shifted due to frequent flooding of the Brahmaputra river, Sri Raseswar
Saikya Barbayan brought him along to Guwahati to showcase his emerging talent. In 1980, Sri Bora joined the State Music College, Assam, as a teacher of Sattriya dance and currently is settled in Guwahati. In 1987, he started his one institute called Sattriya Kala Kendra to impart training on Sattriya. The school has produced a group of young and talented performing artists from all over the world. Sri Guru Bora has also established over 25 schools for training on Sattriya all over the Assam. Sri Bora has also performed extensively in various musical platforms and festivals throughout the country. Sri Bora recently performed Sattriya dance and played Khol in Bharat Mahotsav held in Southeast Asia, including Malaysia, Indonesia, and Australia. He has collaborated with the SPIC MACAY for the past 6-7 years. Sri Ganakanta Bora has also authored 2 books on Sattriya dance. First is Mati Akhura and second is Khol Shiksha. Awards and honors. He is currently the head of the Department of Sattriya, Music and Dance of the Government State College of Music, Assam. Apart from his associations with various cultural institutions, he is associated with the project of support to Sattriya Dance and Dance Music Sangeet Natak Academy, New Delhi as Guru, providing advanced training in Sattriya dance and Khol. Sri Bora is also associated with the national level Sangeet Natak Academy project called Onkya Bhavna and Ram Bijoy Nat in Rojavli dialect. He has been awarded the Padma Shri in 2013 by the Government of India in registration of his distributed contribution to Sattriya dance. In 2001, he was awarded the prestigious Sangeet Natak Academy Award for his seminal contribution to Sattriya dance. At the age of 15, he attained the title of Barbayan at Majuli Satra, means the title of Barbayan given by the Satras is equivalent to contemporary degree to Master of Arts. In 2008, he was honored with the title of Bayanacharya, which is the highest honor given by a Satra. Till date, only 2 Satra Gurus have been honored with the title of Bayanacharya, late Maniram Dutt, Muktiyar Barbayan, and Sri Guru Ganakanta Bora. Thank you, Param, for this beautiful information. Now, I will invite Disha Shankani to give us introduction of Vidushi Dr. Anvesha Mahanta Madam. What is the name of the student? Mansi, what? Disha Disha. Shankani. Okay, sir. Vidushi Dr. Anvesha Mahanta, a dedicated and promising young exponent of Sattriya dance. Vidushi Dr. Anvesha Ma'am has received accolades from the art concerns and scholars for the grace and liveliness of her dance and expressiveness of her abhinay. A national award, Sangeet Natak Academy Yuva Award. She received her training under the eminent maestro and the Sangeet Natak Academy Award, Bayanacharya Ganakanta Bora, and has been learning, researching, and interpreting Sattriya dance, music, and theatre since 25 years. Vidushi Dr. Anvesha Mahanta Ma'am has been working and presenting lecture demonstration
and workshops in several places and institutions with an aim to reach out to more and more children and other scholars and art lovers. She has several publications to credit, illustrating her research in performance narratives and dance tradition of Northeast India. She has thus carved a space in the Sattriya dance world with her understandings, research, interpretation, and outstanding performance drawing, applause, and appreciation from both the media and the cognoscenti, and established an unfollowing record of excellence in her performance career. Honors and awards. Guru Kelu Charan Mahapatra Yuva Samman, Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar, National Award by Sangeet Natak Academy 2014. A grade artist of Sattriya by Doordarshan Prasar Bharati, the National Broadcasting Corporation of India 2006. Award scholarship by Sangeet Natak Academy 2003. Thank you. Thank you, Disha Sangani, for this beautiful information. I now invite Great Master Guru Khana Kanta Bora and Vidushi Dr. Anvesha Mahanta Madam to speak about the lovely Assamese Sattriya dance. নমস্কাৰ গুৰুজী Namaskar, Guruji. কিৰণ ছেত্ৰী প্ৰমুখ্যে স্পিক মেকেৰ সমূহ বিষয়ববীয়াসকলক মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আজি এই স্পিক মেকেৰ মহান অনুষ্ঠানটিলৈ আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে সমূহ স্পিক মেকেৰ পৰিয়ালক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। লগতে আজি এই অনুষ্ঠানত যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকললৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। ধন্যবাদ। Namaskar to one and all present over here. And first and foremost, on behalf of Adhyapak and on behalf of the entire fraternity of Sattriya Dance, we sincerely thank SPIC MACAY for making us a part of this beautiful endeavor. And as Adhyapak says, he is truly honored to be a part of this series. So he offers his sincere gratitude to SPIC MACAY and also the host institution for providing this beautiful platform of bridging minds, bridging our hearts together through the medium of arts. So also I would like to thank our young friends who had given such beautiful introduction. Just few words. Adhyapak had retired long back from State Music College, and since then he has been engaged with his objective, his goal of teaching and mentoring so many hundreds of students across Assam and also outside. And whenever we talk about Sattriya dance, so Sattriya this is how we pronounce it in Assam, in Assamese, which gets translated in English into Sattriya. But so Sattriya dance is a dance form which takes us to 15th century. So whenever we take account of some of the ancient dance traditions of India, this is one of the dance tradition that is still living. When we say living, it means it's still practiced as a ritual in the Namghars, in the Sattriya institutions, the Sattras, the Vaishnavite monasteries of Assam. So this dance form was introduced by the great saint, poet, preacher, philosopher, social reformer, Sri Mahapurush Srimanta Shankardev, and his principal apostle, Sri Sri Madhav Dev. So both the Guru and the Shishya, both of them, they had taken the medium of arts, and through the medium of arts, they reached out to the whole region of Kamrup, the whole region of Assam, with a message of peace, with a message of social harmony, and with the message of Bhagavata. Because the Bhagavad Puran is one of the central doctrine which is followed in our tradition. So with that message, through the medium of arts, the saint poet and his principal apostle Sri Sri Madhav Deva, they introduced Ankya Bhavna
Bhana is one of the classical Sattriya dance theatre, and this was the roots that shaped up the Sattriya dance as you see today. So be it music, be it dance, be it theatre, be it crafts and mask traditions and so many other allied traditions became a part of this entire bhakti movement which was introduced by the saint poet. And with that, it brought such a great resurgence, such a great change in the entire Assamese society that it has its impact even today. So the whole new introduction that happened to Assam was because of this introduction of Bhakti movement, which had shaped us, which has given Sattriya theatre, Sattriya dance, Sattriya music, Sattriya crafts, altogether making it an exquisite tradition which is practiced even today as a living tradition, as a ritual. And at the same time, you also get to see this art form in the proscenium and this modern stages. So this has a very beautiful historical development of rituality, and at the same time presented as one of the proscenium art form that we have. So this was just a brief introduction of the dance form, because we can speak hours and hours, but I'm sure our friends, young friends over here, and also the faculties, the respective faculties might have some question for Adhyapak. So I leave the forum to you. If you have any questions, we would definitely love to answer your queries. I have one question. Yes. What age did Guruji learn dance? Sorry, what age? What age did Guruji learn dance? So this is a very interesting pattern of introducing a child in the hotra. So Adhyapak, when he was a child, at the age of 4, he was offered, his family offered him to the Kamlabari Satra. And since then, he was his guru, Moniram Dattamukti, whom you have already introduced, whom we have already spoken about in the introduction. So we refer to him as Koka. So he became the sole guardian of Adhyapak, and like a father, he had taken responsibility of Adhyapak since then and groomed him in the entire all-round education which a child needs, apart from the musical education. So he trained him in khol, he trained him in dance, and at the same time in Hotra institution, a child is also supposed to learn various other art forms. So if you need to understand dance, you also need to have a good understanding of the music tradition. So the child is also introduced to the Sangeeta tradition, and with that, a holistic training is given to the child in the Hotra. So that is how Adhyapak at the age of 4 started his creative journey under the guidance of our great master, Moniram Dattamukti Koka. And since then, he had taken, at a very young age, he had shown his, capacities and skill in the creative field, and at a very young age he had taken the responsibility of the Hotra. So at the age of 15 itself, he had taken the sole responsibility of conducting the ritual. So here, sitting here, it might sound easy. What is such a big deal in conducting a ritual? But it's a very long series of sequence of events which one who takes the leadership of conducting it, he has to undertake a lot of responsibilities of conducting the performances, day and night performance. So right from the morning, it's like 24/7 engagement which keeps happening, and for several days. So it's a big responsibility. So Adhyapak at a very young age, he had shown that leadership in the field of arts, and with his skill, he had
trained several youngsters, and at the same time prepared them for the ritual, and later on carried forward this service to the Satra for a long time. Thank you, ma'am. Now, I request the SPIC MACAY technical team to present video. Please switch off your videos and audios for a moment. Let me. Before we present the video, I'll just request Dr. Anvesha to please tell students more about this dance form as such. You know, this is a living tradition, so you can explain a bit about the form, you know, how it is being done, how it is carried forward, a bit about that, and then we will start the videos. Sure. Thank you, Ashokji. So as I said, this dance form, when we say living tradition, it's very interesting that in the Hotra, the way I just mentioned, a child is offered and given holistic training. So that kind of training is done even today in the Hotras. And at the same time, outside the Hotras, you know, several young learners, several young enthusiasts from various parts of the world are also learning. So what makes this dance form so unique or so distinctive? Because we have so many performance traditions. So first, you know, the moment you see this dance form, its technique, its movement, it's the wavy movements, the up and down, and very graceful movements, which incorporate the technique of this dance form. And then right starting from the basic sense, अगर आप कोई भी dance form अगर आप लेते हैं, तो हर एक dance form का एक अपना अंदाज होता है कैसे आप डांस शुरू करेंगे. तो वो हमारा बेसिक स्थिति होता है. तो वो स्थिति ही एक डांस का टेक्निक का शुरुआत है. तो वो शुरुआत से लेके अंत तक इस डांस फॉर्म का एक अपना टेक्निक है, जहाँ पे साइक्लिकल पैटर्न है. आप बहुत सारे चक्कर, यू नो, पिरुएट्स जो हम बोलते हैं, उस तरह का आप चक्कर देखने को मिलेगा. फिर आपको उत्प्लावंस देखने को, उत्प्लावंस मतलब जंप्स, वैरायटी ऑफ जंप्स. और सबसे खासियत ये है कि ये दोनों अंदाज में इस डांस फॉर्म को किया जाता है. जैसे इसमें मेल प्रेजेंटेशन है और फीमेल प्रेजेंटेशन है. तो क्योंकि ये इसका रूट्स अंकियानाट से आता है, अंकियानाट जो मैंने पहले बताया है कि ये एक क्षत्रिय थिएटर फॉर्म है, नाट्य फॉर्म है. तो वहां पे हमारे पुरुषों का भी किरदार होता है, महिला का भी किरदार होता है. तो उसी का टेक्निक लेते हुए जब क्षत्रिय डांस एज एन इंडिपेंडेंट विंग इवॉल्व हुआ था, तो इस टेक्निक को यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है. तो हम बेसिक स्थिति में ही आपको मालूम चलेगा, अगर हम ऐसे रुकेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये पुरुष का रिप्रेजेंटेशन अब डांसर करने जा रहे हैं. अगर हम इस तरह रुकेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ डांसर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट प्रकृति, मतलब महिला का जो पार्ट है वो करेंगे. तो इस तरह का एक बहुत ही अनोखी अंदाज है इस नृत्य में. साथ ही में अगर आप हमारे कॉस्ट्यूम देखेंगे, वो भी एक अलग पहचान है. जो हमारा ट्रेडिशनल यहाँ के टेक्सटाइल है, उसी से ही बनता है हमारा ये कॉस्ट्यूम. और स्त्री और पुरुष दोनों रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारा कॉस्ट्यूम अलग अलग है. अगर हम पुरुष का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं धोती पहन के, यहाँ पे आंचल लगा के, यहाँ पे पगड़ी पहन के हम उस क्षत्रिय नृत्य को आपके सामने रखेंगे. और जब हम प्रकृति प्रदर्शन करेंगे तो हम इस पे अपना एक स्कर्ट पहने, लंबा सा स्कर्ट जो असम टेक्सटाइल से बनता है, फिर यहाँ पे ओढ़ना है. तो ऑल टुगेदर जो हमारा कॉस्ट्यूम है वो भी एक अलग पहचान है. साथ ही में इसका संगीत, इस पूरे ट्रेडिशन का जो संगीत है वो भी एक अलग है, क्योंकि हमारा जो रागज हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम ताल हम इस्तेमाल करते हैं, वो प्योरली क्षत्रिय संगीत में है. तो इसका भाषा असमिया है, साथ ही ब्रजबली है.
तो किसी ने यहाँ पे ब्रजबुली भाषा के बारे में बताया भी था इंट्रोडक्शन के दौरान। तो ब्रजबुली भाषा में हमारा ये संगीत रहता है जो कि शंकर देव जी और उनके प्रधान शिष्य माधव देव जी के रचना थे। और साथ ही में असमिया जो हमारा लोकल भाषा है उसमें भी एंशियंट असमीज, उसमें आपको ये संगीत सुनने को मिलेगा। और साथ ही में जो नृत्य का क्रम है वो क्रम भी एक नृत्य का पहचान बन जाता है। कैसे आप इस नृत्य को पहले प्रदर्शन करेंगे, तो आज आप उसका एक झलक देखेंगे। जैसे हमारा खोल का एक वादन रहता है जब हम ग्रुप रिप्रेजेंटेशन मोस्टली करते हैं, तो खोल का एक ऑर्केस्ट्रल प्रेजेंटेशन रहता है। फिर उसके बाद वंदना होता है, शुद्ध नृत्य होता है, अभिनय होता है। तो वो जो क्रम है नृत्य और नाट्य का, उसी से मेल होके ही हमारा एक सत्रिया का रेpertoire का एक अनोखा इसका एक पहचान बन जाता है। तो इसी तरह अगर हम पूरा टेक्निक से लेके, कॉस्ट्यूम से लेके, संगीत लेके, पूरा जो इसका भाषा है, ताल, राग, ये सारा जो अगर हम कुल मिला के देखेंगे तो इसी से ही इस नृत्य का एक डिस्टिंक्टिव एक कैरेक्टर बनता है जो सत्रिया नृत्य को पहचान कराता है। जी अन्वेषा मैडम, students have one student has sent me a question. वो थोड़ा डिटेक्ट रहे हैं, they are little scared, so I will read out the question. What is bayan playing? What is bayan playing? BAYAN, bayan playing. ओ बायन जो बजाते हैं उसको हम बायन बोलते हैं, जो गाते हैं उसको हम गायन बोलते हैं। तो अध्यापक को सत्र में बायनाचार्य उपाधि से उनको सम्मानित किया गया है, क्योंकि अध्यापक जो सत्र में जो नृत्य में अपना वो क्या बोलते हैं डेक्स्टरिटी एंड कॉम्पिटेंस दिखाते हैं और स्किल दिखाते हैं, और साथ ही में वो खोल में भी उनका एक्सपर्टीज रहता है। तो उन लोगों को बायन, पहले बायन बनते हैं, उसके बाद बरबायन बनते हैं, वो एक प्रमोशन होता है। और जब एक आचार्य बन जाते हैं, इतना वो उस सब्जेक्ट में बहुत काम करते हैं, कंट्रीब्यूशंस कर, you know, he has contributed immensely in the field of khol playing and at the same time rhythm composition। बहुत सारे इनके कॉम्पोजिशंस हैं और उन्होंने नृत्य का रचना भी किया है। तो उसी सब को देखते हुए सत्र, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ के लिए, इट्स when a satra offers a recognition, तो उसी को ध्यान में रखते हैं बायनाचार्य उपाधि से अध्यापक को सम्मानित किया गया था। एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर मैडम, गुरुजी का कुछ यूनिक एक्सपीरियंस है इस जर्नी में, एनीथिंग व्हिच ही वांट्स टू शेयर टू चिल्ड्रन, anything something different which he feels it has been part of his life which is unique we want to share? আপোনাৰ প্ৰশ্ন এটা সুধিছে, এনেকুৱা এটা কি আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্স আপুনি শেয়াৰ কৰিব খুজিছে গোটেই জাৰ্নিটো যেটো আপুনি শিকিলে এই কলাৰ যাত্ৰাটো, যেটো আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালী সকলক কিবা ক'ব খুজিছে নেকি? এই গোটেই মানে এই মাধ্যমেৰে আপুনি নিজৰ জীৱনত কি শিকিলে, মানে এনেকুৱা কি ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স? গোটেই কথাখিনি অন্বেষাই ইংলিছত কৈ দিব, মই থুলমূলকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ। সত্ৰৰ যিটো পৰম্পৰা, সত্ৰৰ এটা উদাসীন সম্প্ৰদায়, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱক দায়িত্ব দিছিলে, আৰু মাধৱদেৱৰ পৰৱৰ্তী বদলা পদ্ম আটাক তেওঁ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব দিলে, আৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ উদাসীন আছিলে, আৰু সেইমতে বদলা এটাই পতা কমলাবাৰী সত্ৰও উদাসীন পন্থ। সেই পন্থত তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰীতি নীতি, শিক্ষা অকল নৃত্য গীত বাদ্যই নহয়, তাত সেই অনুষ্ঠানটোত থকা ভাষা ইত্যাদি আৰু শিক্ষা দীক্ষা সকলোবিলাক, আৰু তাৰ লগতে কুটিৰ শিল্পও শিক্ষা দিয়ে ইত্যাদি, এই গোটেই বস্তুটো তেওঁলোকে এটা পৰম্পৰাভাৱে
আজি 600 বছৰে জীৱিত পৰম্পৰা হিচাপে ৰক্ষা কৰি আহিছে আজিও বৰ্তমান চলি আছে উঠন পতন হয় মাজে মাজে কেতিয়াবা উঠন নহয় কেতিয়াবা পতন ঘটেই কিন্তু শেষ হৈ যোৱা নাই চলি আহিছে কথাখিনি সুন্দৰভাৱে মই মোটামুটি কৈ দিছো আৰু কৰ্ণেখাই সুন্দৰকৈ আপোনালোকক बताই দিব तो अध्यापक ने बताया है किस तरह उनके लिए मान्य रखता है आज भी ये जो एक जीवन परंपरा का लेगेसी है जैसे गुरुजन ने श्रीमान हम जब गुरु बोलते हैं हमारे लिए सत्रिया ये पूरा कम्युनिटी के लिए गुरुजन सिर्फ श्रीमान शंकर देव जी हैं और उनके प्रधान शिष्य माधव देव तो उन्होंने जिस तरह जिस एक बड़ा विजन सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कला के माध्यम से इतना बड़ा विजन लेके जो उन्होंने काम किया है वो ही you know it has been passed down to several generations with so much of sincerity and passionate dealing in the hot drum and he feels that उसी क्रम को हम आगे अपने बच्चों next generation we are trying to pass it on so he says that that itself is a very it's a blessing that he could be a part of that और इस जर्नी का इस लीनिएज को और वही मैं भी हम भी एक इस सत्रिया का एक सत्रिया परंपरा का शिष्य मानते हुए हम भी अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि हम भी इस परंपरा अध्यापक पूरे इस लीनिएज का एक शिष्य बन पाए और साथ ही में एक बात मैं कहना चाहूंगी क्योंकि मैं अध्यापक से बचपन से ही उनके साथ एक जर्नी रहा है जो सबसे बड़ी बात हमारे बच्चों को मुझे मिला है और which we all can learn is simplicity अध्यापक बड़े से बड़े मुश्किल जो हम किसी भी चैलेंज जब आते हैं उस चैलेंज को चैलेंज नहीं मान के with all his capacity, with all his simplicity, with all his humility, he has accepted all the challenges in life with such a big smile, and he had taken it forward to, as an opportunity to work for betterment. तो ये मैं बचपन से ही उनको देखती आई हूँ और हर किसी कोई भी मौका हो he approaches with all his simplicity and humility, which is such a great lesson for all of us. कि अपना ईगो जो है वो छोड़ के आप अपने आप को सरेंडर करके उस मोमेंट को you live to it. So that is what, as a shishya, it's a great lesson of life which I had learned from Adhyapak, and it still inspires me at every moment. Yeah. Vidushi, we will start the video presentation. Can you please explain the videos that we are going to play to the children? Yes. So आज जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं वो एक सत्रिया नृत्य का एक उसका क्रम जो रेpertoire हम बोलते हैं हर एक नृत्य का एक क्रम है उसका एक थोड़ा सा आभास आपको मिलेगा तो आप शुरुआत में देखेंगे इस जो वीडियोस में है किसी बहुत पुराने वीडियोस है जहाँ पे अध्यापक बहुत पहले 2009 2001 उस तरह का वीडियोस है यहाँ पे इट्स फ्रॉम द आर्काइवल वर्क तो पहले हम शुरुआत आप देखेंगे खोल वादन से तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम खोल ये ऑर्केस्ट्रल प्रेजेंटेशन से हम हर एक रिचुअल शुरुआत करते हैं और उसका एक छोटा सा ग्लिम्स हम प्रोसेनियम थिएटर में भी करते हैं तो आज के वीडियो की शुरुआत होगा खोल वादन में जहाँ पे आप देखेंगे अध्यापक खोल बजाते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वंदना से तो वंदना में हम क्योंकि ये हमारे ये वैष्णव परंपरा है और वैष्णव जागरण से इसका जुड़ा हुआ है ये पूरे परंपरा तो कृष्ण के ऊपर आधारित है हमारा हर मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर रिलेटेड टू कृष्ण और 10 इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु तो शुरुआत में आप एक कृष्ण वंदना देखेंगे जो अध्यापक और उनके शिष्य आपके सामने रखेंगे
उसके बाद आप देखेंगे एक पुराना रिकॉर्डिंग अध्यापक का, जहाँ पे अध्यापक ने शुद्ध नृत्य प्रेजेंट किया है, बाहर नाच। बाहर नाच एक बहुत ही जोरदार डांस प्रेजेंटेशन है, मेल डांस प्रेजेंटेशन। और इसमें आप जो मैंने कॉस्ट्यूम का डिफरेंस बताया था आपको, उसका झलक भी दिखेगा। वंदना में आप देखेंगे वुमेन, देयर आर वुमेन डांसर्स आल्सो who have adorned themselves in female costume, लेकिन उसके बाद शुद्ध नृत्य में आप अध्यापक को देखेंगे मेल कॉस्ट्यूम में। और खत्म होगा आज के वीडियो एक छोटा सा अभिनय के पीस जो अध्यापक के निर्देशना से बनाया गया था, होकी है सोले कानो विरिंदा बने, जहाँ पे एक गोपी अपने सखी के साथ अपना अनुभव वो बोलती है, क्योंकि उनका जो मन का जो स्थिति है वो कृष्ण तक नहीं पहुंचा पा रही थी, तो अपने सखी को बोलती है होकी है सोले कानो, कान्हा जा रहा है। और उनका मन का जो बहुत कई सारे भाव है वो अपने सखी को वो बोलती हैं। तो इसी तरह आज का वीडियोस खोल बादन से अभिनय तक का एक छोटा सा सफर रहेगा। Before we start the video, Abhishek, I request all the people to put off their audios and videos and please sit back and enjoy the video. Please, it's a wonderful journey of Guruji and Anvesha madam has put together this. So please, all of you put off your audio and video. Abhishek, you can start.
After Guru Ghat, we move on to our next presentation. Sattriya dance repertoire gets divided into Purusha and Prakriti representation. Our next part is a Prakriti representation by a group of students of Adhyapak Bhayanacharya Khanakanta Bora. The presentation begins with an invocation, Vandana, in which the dancers pay obeisance to Jagat Guru, Sri Krishna. As Sattriya dance has evolved because of the Vaishnava movement, most of the themes that we take up in this dance form revolve around 10 incarnations of Lord Vishnu. And Sri Krishna and his Leela are one of the predominant themes that we take up in our dance form. So our next part begins with an invocation offering salutations to Lord Krishna. This will be followed by a pure dance sequence, Ramdani, taken from Rosaghoria Salinas. The musical team supporting in today's presentation, we have on khol Sri Debojit Hoikya, on cymbals Bhayanacharya Khanakanta Bora himself, on vocal Sri Nityananda Deka, and on flute Sri Navajit Hoikya. Presenting before you Vandana and Salinas Ramdani.
পদ্ম নেত্র পদ যার পদ পত্র নমো ভক কর ভয় হারি নমো পদ্ম নেত্র পদ যার পদ পত্র নমো ভক কর ভয় হারি Kita dina tatta ta kita kita ta kita dina dina nita dina deni tau hey dina hey বসুদেব সুত কৃষ্ণ তুমি ভকতর ইষ্ট বসুদেব সুত কৃষ্ণ তুমি ভকতর ইষ্ট কংস সানো রাধি বিমর ধন কংস সানু রাধি বিমর্দন দৈব কি হৃদয়ানন্দ জগতর গুরু কৃষ্ণ দৈব কি হৃদয়ানন্দ জগতর গুরু কৃষ্ণ তোজো পায়ে করো বন্দন তোজো পায়ে করো বন্দন তোজো পায়ে করো আবে যেবে নিজ ভিত্য বুলি পালা হরি 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 তেবে কৃপালু কৃত্য কৃত্য তেবে কৃপালু কৃত্য কৃত্য
Ramesh sir, you can please go ahead. Thank So, you. Pranam Guruji, Pranam Dr. Anvisha Madam. We have about 5 minutes. Do you think you can tell something a little more about before we can give a vote of thanks? We still have 5 minutes, Guruji. I think so. That's what we tried to share in our entire video was a very short glimpse.
because to speak about the tradition, to speak about the experiences related to the entire whole Anveshari, repertoire of can you talk about what it is in a hotra? Hotra is, I mean, what does it mean? और जैसे एक मैंने अक्सर सुना है when you give a presentation कि हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं आसाम में या सत्रिया में कि आपको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, and even if you can achieve the God through the dance. Right. Very interesting. That's very elevating also. True. So can you just tell us a bit about that? Actually हमारे यहाँ पे यही माना गया है, ये जो पूरा आर्ट का जो कला का जो कॉन्सेप्ट है वो ही मुक्ति हमें देता है. तो एक हमारे जो सूत्र है वहां पे नाटक में हमें शंकर देव जी का एक लिखाया गया है, नाटकम मुक्ति साधकम. अगर आप कोई भी आर्ट देखते हैं, अगर आप कोई भी आर्ट करते हैं, आर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, बी इट एज एन ऑडियंस, बी इट एज अ प्रैक्टिशनर, बी इट इन एनी फॉर्म, आपको मुक्ति उसी समय, that the process of art itself liberates you. मुक्ति आपको वैसे ही मिलता है. तो ये पूरे उस कॉन्सेप्ट से हर एक जो सत्रिया के साथ जो भी एक आर्ट फॉर्म से बना है, सत्रिया परंपरा, जैसे कि मैंने बताया, सत्रिया सिर्फ डांस ही नहीं है, इसमें थिएटर है, म्यूजिक है, परकशन है, क्राफ्ट्स है. अध्यापक ने कुटीर शिल्प के बारे में भी बताया है. तो हर एक जो कला है वो एक प्रैक्टिशनर उसी डेडिकेशन के साथ करते हैं. और हॉट्रा में, जैसे कि अशोक जी ने अभी बताया है, हॉट्रास आर द वैष्णवाइट मोनास्ट्री. तो आज सत्रिया आज जो जिस शेप में है, इसका आप राग ले लीजिए, इसका आप प्रिजर्वेशन के बारे में ले लीजिए, इसका जितना भी 600 साल का जो वॉल्यूम ऑफ वर्क है वो आज हमें अभी भी मिलता है only because Satras has kept it alive as a ritual. अगर सत्र का स्थापना नहीं होता तो ये सत्र का जो कॉन्सेप्ट है ये भी गुरुजन ने उसी समय उन्होंने सोचा था, एक दृष्टि रखे कि ताकि बाकी के जनरेशन में इन फ्यूचर we have an institution which can preserve, which can work, which can develop these art forms. तो उसी हिसाब से सत्र का स्थापना हुआ था और आज भी उसी डेडिकेशन के साथ वहाँ के जो मंक्स हैं, वहाँ के जो भक्त हैं, वो उसी डेडिकेशन के साथ आज भी करते हैं. और जैसे कि मैंने बताया है, आर्ट इटसेल्फ इज लिबरेट्स यू, उसी ध्यान के साथ कि आपको और कोई यज्ञ या कोई बहुत सारा मतलब प्रसंग करने की जरूरत. ये आर्ट इटसेल्फ इज अ प्रसंग. आप खोल का प्रसंग कर लीजिए, नृत्य का प्रसंग कर लीजिए, संगीत का प्रसंग कर लीजिए, उसी में ही आपको मुक्ति मिलेगा. तो उसी भाव को लेके, उसी भक्ति के साथ आज भी लोग इस नृत्य को अपनाते हैं, इस परंपरा को अपनाते हैं और हर कोई इसी भाव से आगे बढ़ता है. Thank you, Anvesha madam. Actually, one of the students have sent a message to me that they want to see this dance live in the school. So, oh yes, we would also love to demonstrate, in live with live presentations. Because they feel that they feel that they want to see all of you live actually. So it is their wish. One of them has sent that, please sir, organize this program live for us. Yes, and students, we would also love to interact with you live. So I hope now situations are becoming better, and I hope in future we can, with SPIC MACAY itself, we can definitely meet you and have live sessions. जी मैडम, एक छोटा सा एक्सपीरियंस है. तो व्हेन आई वाज सीइंग द वीडियोस, सो द खोल का जो प्रेजेंटेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्पीड एंड मूविंग टू द थर्ड स्पीड, so I was like afraid, so how a person could balance the tar, like cymbals are balancing from the back side
and the khol. So it requires how much effort and practice to present in such a beautiful manner. Really, my humble pranams to Guruji that मतलब इस तरह से वो परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा रहे हैं. And the last but before one, that was like वो अभिनयन है जो आपने किया है मैडम. So it was like I was waiting that okay, really waiting for Lord Krishna. So वो जो experience है वो मतलब बोलने के लिए मेरे मुंह से शब्द नहीं आ रहे हैं. So such a lively experience. So really humble pranams and thanks both to Guru and Shishya. Thank you. So Manasi, I think we can request if we have no questions. Thank you, Guruji and Madam Ji. And if you have no questions, we can have the vote of thanks given by the student. Also, on behalf of Adhyapak, we once again sincerely thank SPIC MACAY, all the team members of SPIC MACAY, and also the host institution for providing this space, for giving us this opportunity to share our humble knowledge about the tradition. And yes, like the children, we are also looking forward to share more about this art form through live sessions. Once again, thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. So, I request Shrikari, please say the thanks for something of SPIC MACAY. I would like to thank each one of you here today for supporting us throughout the event. Today we leave with the feeling that it holds true for living legend Guru Ghanakanta Bora, a great teacher who showed the correct path of teaching. He is a perennially flowing river and he lives forever in Indian music and dance. Wish to Vidushi Dr. Anvesha Mahanta for sharing her experiences about living legend Guru Ghanakanta Bora. Also would like to thank founder director of SPIC MACAY, Professor Emeritus Dr. Kiran Seth from IIT Delhi, bestowed with Padma Shri and Sangeet Natak Academy Award, and SRF Foundation for making this event happen. Also thank to principals, teachers and students from Lakshman Gyanpit Madhyamik Shala, Ahmedabad. Thank you, Shrikari. We hope you all enjoy your time today. Thank you. Have a great weekend and bye-bye. And Abhishek, before we say formally thank you, next week, Great Masters at 3 p.m. we have Srirangam Gopalaratnam, a Carnatic vocalist, and so the details will follow to all of you. Thank you very much for all the efforts, principals, teachers, Guru Boraji, Madam Anvesha ji, for all the time you have taken to come forward to make this event a very nice one. And I hope with this corona going off, we should be able to, bring back the programs live to the school. Because right now, one advantage of this live program is we have reached many schools. That is one advantage of this live program, online program. But live program you can see 400, 500 children seeing it in the school, and seeing live is something different. So at some point, yes, I agree to the students' question. We will definitely have your program sometime in different parts of the country, madam. Thank you. Thank you, Guruji. Namaste. Formally, Abhishek, you can